Bismillahirrahmanirrahim. Hello and welcome to another episode of Tea Time. And we are continuing the series of cricket leagues and their presidents and talking about how the successful leagues have performed in Toronto. Today, I have president of a league which has been very successful. It is the very first indoor winter league and now has become one of the most famous league in Toronto, in Canada. With me, I have in studio Manmeet Singh. Hey Manmeet, how are you? Good, brother. Firstly, thank you for having me here. Manmeet, before I ask you any questions, I want to ask you very simple questions. Introduce yourself. Who is Manmeet Singh? Who is Manmeet Singh? I would say I'm the ambassador of the sport. Cricket is something that has been in my blood from like childhood. If I recall, if you tell me who's Manmeet, I would just say cricket जिंदगी है मेरी. ठीक है, तो अगर आप क्रिकेट सोचोगे तो कभी ना कभी आपको मेरा नाम याद आ जाएगा. सो मनमीत इज क्रिकेट. ठीक है मनमीत, लेकिन मैं चाहता हूँ कि लोगों को पता चले कि मनमीत का क्रिकेट से ताल्लुक क्या है, कैसे एक बच्चा बड़ा होता हुआ क्रिकेट से इतना अटैच हुआ. हाउ डिड यू गेट अटैच टू क्रिकेट फ्रॉम योर चाइल्डहुड? Give me something that how did you connect from your childhood? Did you start watching someone? Is there I watch it. I was a big fan of Ganguly and Shoaib Akhtar. Yeah. That's what encouraged me to be a cricketer. What about you? My brother watched a lot of Test cricket, ODI cricket that time, and because of him, I got into the sport. उसके बाद से I think धीरे धीरे जब आप गली क्रिकेट में जाते हो और देखते हो कि बड़े आपको फील्डिंग करवाते हैं, आपको फील्डिंग में भी बहुत मज़ा आता है, भागते हो बॉल के पीछे. वहाँ से आई थिंक मेरा सफ़र शुरू हुआ था और उसके बाद धीरे 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 आई थिंक वो मेरे ऐसे ब्लड में चला गया कि बस वो सब कुछ ही है इस वक्त. बड़ा हुआ खेलते हुए. आई थिंक मैं 9th या 10th में था. उस वक्त तो ऐसी एक्साइटमेंट होती थी क्रिकेट की कि आई वाज द वन ऑर्गेनाइजिंग बाय द वे उस टाइम भी. अच्छा. हाँ, तो मैं सबको बुलाता था. मैं वो बच्चा था जो सुबह मुझे पता होता था कि किसको बेड पे जाके उठाना है, किसके दरवाजे तक किसको आवाज़ मार के उठाना है, तो मुझे पता था सबको कैसे एक साथ लेकर आना है. एंड द मोमेंट आई शिफ्टेड टू कैनेडा, वो ग्रुप ने पूरा सबने क्रिकेट खेलना छोड़ दिया अनफॉर्चुनेटली. बट आई थिंक जो इनिशिएटिव मैं हमेशा से लेता आ रहा हूँ, मैंने कंटिन्यू किया इधर आके. I'm pretty sure Manmeet, a lot of cricketers started cricket in Canada because of your efforts. मैं उसके बारे में बात ज़रूर करूँगा. I will talk about that in details when we talk about Lakeshore Cricket League. But next question, how old were you when you came to Canada? And of course you just compared yourself playing cricket in India versus Canada. Yeah. The facilities, the resources, there's a huge difference. How did you tackle that? There is a huge difference, but एक चीज़ जो कनाडा में लोग वैल्यू करते हैं, जो नॉर्मल क्रिकेटर्स के लिए यहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं इस वक्त, वो जस्ट प्राइसलेस हैं. जब मैं कनाडा आया था आई थिंक 2011 में, उस वक्त इतनी फील्ड्स नहीं थी, राइट. तो उस वक्त अगर मैं कंपेयर करूँ, आपको मैं एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ. व्हेन आई केम टू कनाडा, मैं यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में एडमिशन हुआ था मेरा. सो आई वाज लाइक कि मेरा क्रिकेट शायद डन हो चुका है. तो फर्स्ट थिंग, आई डिडंट गो टू अ क्लास. मैं सीधा जाता हूँ स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में और वहाँ पे एक लेडी बैठी थी. एंड आई आस्क्ड हर हाउ कैन आई जॉइन क्रिकेट, एंड शी सेड व्हाट इज क्रिकेट. दैट मोमेंट आई जस्ट थॉट ओ माय गॉड. आई मीन अगर यहाँ पे लोगों को यही नहीं पता कि क्रिकेट क्या चीज़ है तो मैं आगे क्या ही एक्सपेक्ट करूँगा. बट धीरे धीरे आई फाउंड a cricket club there, और धीरे धीरे over the time I became the president of University of Toronto, Mississauga, and that's how my journey started. 4 years I was just organizing cricket for students. Wait, rewind back. You said president of University of Mississauga. You're talking about student council or a club? A club, cricket club. Okay. So like that time, it was a cricket club that was there in UTM. So I was the one who like kind of made my efforts through कि cricket के लिए जो हो सकता है उस time पे. And then that's how the journey began. Okay, great. Manmeet, that's amazing. Let's talk about Manmeet the cricketer. What do you do? Batsman, wicketkeeper, bowler? I know. I want viewers to know. Well, I'm a batsman, ideally an opening batsman who likes to build his innings and then like play for the team, of course. But I've been there for the team according to the situation. Who did Manmeet look up to as a kid to be a batsman like? Like growing up, Sachin and then Yuvraj Singh. So Yuvraj Singh. Fair enough. Yeah. All right. Manmeet, becoming the president of cricket in UTM, then starting the Lakeshore Cricket. I
was doing some research, and I could be wrong because not a lot of data was available. ChatGPT. So, starting for school, if I'm not wrong, you started for the school only first. That is correct. Yes. So tell us about it. What went through your mind, and how did you expand to Winter League? You know, that time, उस टाइम पे क्रिकेट बहुत डिफरेंट था. अगर मैं आपको 2010 में जाऊँ, 11 में जाऊँ, उस टाइम तो ऐसे था कि यार लोगों को बताओ कि यार क्रिकेट क्या चीज़ है. अच्छा, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, मैं सच्ची बोल रहा हूँ. 2011, 2012, 2013 हम क्रिकेट खेलते थे जी. हम सीजन में समर सीजन की बात करूँ 16 या 17 गेमें खेलते थे. करेक्ट. पिछले साल 70 और इस साल 100 से ज्यादा गेमें खेली है. तो क्रिकेट हैज चेंज्ड. जी. फास्टेस्ट ग्रोइंग स्पोर्ट इन कनाडा. प्लीज कंटिन्यू. राइट. अग्रीड. यू नो, सो दैट टाइम सबको एक मोटिवेशन लाना बहुत जरूरी था कि यार स्पोर्ट को मत छोड़ो. आई नो आप कनाडा में हो, समवन हु लव्स द स्पोर्ट, उनको लगता था क्या ही खेलेंगे यार कनाडा के अंदर, यू नो, लाइक क्या ही कंपटीशन होगा. सही. सो द मोमेंट यू काइंड ऑफ मोटिवेट देम टू जॉइन द स्पोर्ट, और मैं ये आज तक करता आ रहा हूँ. कल भी सेम चीज हुई है. एक यू नो लाइक बंदा है जिसने बहुत टाइम क्रिकेट छोड़ा हुआ है, उसको वापस लाने में जो फीलिंग होती है ना, वो मेरी आई थिंक कांस्टेंट रही है. और वही फीलिंग तब भी थी, जस्ट टू अट्रैक्ट. मुझे याद है जो आपका ओपनिंग वीक होता है जब स्टूडेंट्स आते हैं, तो हम लोग टेबल सेटअप करते थे उधर. तो हेलमेट रख दिया, बैट रख दिया, ऐसी चीजें रख दी जिससे एक क्रिकेटर जैसे बॉल रख दी. अगर आप बॉलर है तो आपको बॉल देख के जो एक्साइटमेंट होती है वो अनमैच्ड है. तो वहां से वो जर्नी शुरू हुई कि सबको एक स्पोर्ट के बारे में बताया जाए. फिर धीरे धीरे हमने प्रेजेंटेशन सेंटर्स बुक किए, अपने थिएटर्स बुक किए. जब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का कोई मैच होता है सबको दिखाया जाए, या कोई ऐसा टूर्नामेंट, यू नो लाइक एनी बिग इवेंट. करेक्ट, एनी बिग इवेंट. तो धीरे धीरे करके आई थिंक फिर हमने फंडिंग लेनी शुरू कर दी फ्रॉम द यूनिवर्सिटी. एंड यू नो यू विल बी अमेज्ड, दिस वाज द फर्स्ट ईयर जब ऐसा हुआ कि इन 60 ईयर्स यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में जो बेस्ट स्पोर्ट्स क्लब ऑफ द ईयर का अवार्ड वो क्रिकेट को गया व्हेन आई वाज द प्रेसिडेंट. तो उससे बड़ा प्राउड मोमेंट आई थिंक मेरे लिए नहीं था उस टाइम पे. राइट. मनमीत, मैं अक्सर लोगों को एजुकेट करने के लिए एक बात बताता हूँ. कनाडा का पहला नेशनल स्पोर्ट क्रिकेट था. मैं ये इसलिए बताता हूँ कि जब लोग क्रिकेट के बारे में बात करते हैं, आई वॉन्ट टू अट्रैक्ट फैंस टूवर्ड्स क्रिकेट. एंड द लीग यू स्टार्टेड, आई हैड एन अपॉर्चुनिटी टू प्ले इन इट. आई स्टार्टेड फ्रॉम विंटर लीग. वॉज अमेजिंग एक्सपीरियंस. तो लीग में आना, लोगों को लीग्स में टीम डालना, लोगों को ये यकीन दिलवाना कि यार विंटर में सिर्फ नेट्स में प्रैक्टिस नहीं हो सकती, गेम्स भी हो सकती है, लीग्स भी हो सकती हैं. टेल अस अबाउट इट. तो यू नो व्हेन आई वाज अबाउट टू ग्रेजुएट, हम लोग खेलते थे. हमारी एक ऑर्गेनाइजिंग टीम सेटअप हो गई थी व्हेन आई वाज द प्रेसिडेंट. एंड आई वाज लाइक व्हाट नेक्स्ट, यू नो. फिर उस टाइम पे हमें था चलो इट्स ओके कहीं खेल लेते हैं, विंटर सीजन खेलते हैं. बट जब देखा तो कुछ था ही नहीं. यू नो लाइक विंटर सीजन के अंदर एक भी जगह नहीं थी जहाँ पे क्रिकेट हो रहा है अपार्ट फ्रॉम द नेट्स. आई थिंक वो फीलिंग एज अ क्रिकेटर मुझे बिलीव ही नहीं हुआ कि यार कोई कैसे नहीं कर सकता. फिर जब हमने रिसर्च करी, वी वेंट देयर एंड वी लुक्ड एट द डोम्स, वेरी एक्सपेंसिव. तब आइडिया हो गया कि यार यू नो समवन हैज टू टेक अ ह्यूज रिस्क टू बुक अ डोम फॉर द एंटायर सीजन. एंड यू नो लाइक आई थिंक मेरे दिल में आया कि यू नो ये क्रिकेट के लिए शायद मैं कर सकता हूँ. आई टुक अ बिग रिस्क, बुक द डोम फॉर द इंटायर सीजन, डिडंट नो क्या होने वाला है. दैट वाज द टाइम जब स्टूडेंट्स, यू नो, मुझे बस ये यकीन था कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं या जो मेरा बेस है, दे नो मी. You know, like across universities, I was organizing cricket already. I think वो चीज़ ने काफ़ी help किया उस transition में. But the moment सारे डोम में आ गए, it was a different complete feeling because वो लोग gyms में खेलते थे, छोटे छोटे जिम में खेलते थे. टेप बॉल ही होता है बस यूनिवर्सिटीज़ में, by the way. तो मुझे था यार एक ऐसा गेम लाया जाए जो हार्ड बॉल क्रिकेटर्स भी इंजॉय करें. वहाँ से आई थिंक जर्नी शुरू हुई. हमने अलग अलग डोम्स देखे और सबकी बाउंस चेक करी, वेन्यू के रूल्स डिसाइड किए, और यू नो वो आज तक नाउ इट्स नॉर्थ अमेरिका's biggest indoor cricket league. So yeah, and I'm sure not just the biggest, most competitive probably as well. मनमीत, रूल्स अभी आपने मेंशन किया. मेरा अगला सवाल रूल्स की तरफ जाने वाला था. और मैंने हाई स्कूल क्रिकेट खेली है यहाँ पे. हाई स्कूल क्रिकेट विंटर में होती है पील में, एंड उसमें भी इस तरह के रूल होते हैं कि दीवार पे लगी तो 1 रन, सामने लगी तो चौका छक्का, लेकिन अगर हाइट से ऊपर लगी तो आउट भी होता है. थोड़ा सा डिफरेंट था. जब मैंने पहली बार लेक शोर क्रिकेट गेम में, मैं आपके थ्रू ही आया था एक्चुअली, पहला गेम प्रैक्टिस गेम था जो मैंने खेला, एंड आई रियली लव्ड इट बिकॉज यू कैन प्ले योर स्ट्रोक्स. It was a very good experience. Where did you come up with those rules? And I'm pretty sure a lot of people getting involved, जैसे एक्सटर्नल क्लब्स होंगे, जब वो लीग में आए होंगे तो वो रूल्स पे क्वेश्चन भी किया होगा, ओपिनियंस भी दिए होंगे और फोर्स भी करने की कोशिश करी होगी कि यार चेंज दिस रूल.
how do you manage all those opinions and still contain them to make sure that it runs the way you run it? You know, one thing is कि आप जब rules बनाते हो आपका अपना experience ज़रूर होता है, लेकिन your organizing team, I am very lucky to have the organizing team I have. A lot of them are still back from University of Toronto. You know, वही लोग हैं जो continue कर रहे हैं. So it's just unbelievable journey जो हमने देखी है इतने टाइम से. And यही लोग हैं जब आप इनके साथ शेयर करते हो, सबका एक एक्सपीरियंस होता है और आप सेम पेज पे आते हो. आपने जैसे बोला कि एक हाइट के ऊपर आउट होता है, राइट? सेम हमने भी वही क्रिकेट खेली थी इधर, और वो चीज थोड़ी डिसअपॉइंटिंग होती है. क्रिकेट वो अब से थोड़ा छीन लेता है एज अ बैट्समैन कि यार मैं छक्का कैसे मारूं. तो इसी चीज को हमने हटाने के लिए हमने डोम बुक कराया था कि यार ये फीलिंग हट जाए कि आप जब विंटर में खेल रहे हो तो आपको लगे कि यू कैन प्ले योर शॉट. तो वहां से एक चीज शुरू हुई थी और फीलिंग आउटडोर क्रिकेट देने के लिए था कि यू नो वो जिम में ही रह जाते तो वो फीलिंग नहीं आती बस. ठीक है. Manmeet, how many teams you remember playing for Lakeshore? Extraordinary talent, and I'm talking about indoor only right now. Extraordinary teams which you still feel, yeah, these are the team. And I'm not talking about performance wise, I'm talking about discipline wise and being supportive wise. How many clubs do you remember as a president? A lot. Over the years, I think मैं अगर फर्स्ट ईयर से देखूंगा और अब से एक क्लब जो कंसिस्टेंटली हमारे लीग में सबसे ज्यादा ट्रॉफीज लेके गया है वो वीपी थंडरबोल्ट्स है. Thunderbolts. They have been there from the first year. थंडरबोल्ट्स जब हमने लेक शो स्टार्ट किया था, you know, और तब You're being humble by not taking the name of Eagles, your own club. नहीं, you know, like again, there's so many clubs. Eagles is, of course, it's Yeah, of my course. heart, something Yeah. that I started. You built. I It's your- built it's that, your brainchild, right? yeah, of course. And again, you don't want to take that name. You know, like there are outside clubs that you want to appreciate. But Eagles is, of course, we've always been competitive. But अगर आप मुझे पूछोगे कि यार एक legacy वाली बात होती है, काफी clubs मेरे mind में आते हैं. उसमें से एक VP Thunderbolts है, बहुत clubs है, लेकिन अगर मैं बोलूँगा एक टाइम पे हाँ, सबके नाम जी, नहीं जी, ले सब- सकते, of course, जी. of course. बट ये क्लब है जिसने सबसे ज्यादा चैंपियनशिप हमारी ली होगी, डिसिप्लिन से खेले हैं, कंसिस्टेंटली खेले हैं. सो आई थिंक ऑफ कोर्स ईगल्स की इस साल 14 टीम है, 14 टीम्स. we've had Wow, 14 teams. You need to have league of your own, buddy. जी. तो so yeah, you know, Eagles is something that I had built, but I think if I have to take a name, that'll be Thunderbolts. ग्रेट. यही क्वेश्चन, और मैं खास तौर पर इंडोर की बात करूँ, उसके बाद मैं आउटडोर की तरफ भी जाऊँगा. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंसेज यू रिमेंबर, या ये मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये परफॉर्मेंस हो सकती है. काफी बार हुआ है एक्चुअली. यू नो, लाइक अभी हमारे लीग में यशवंत रेड्डी ने 200 मारा है T20 मैच में. मतलब यार इट्स अनरियल फॉर अ क्रिकेटर टू स्कोर. इंडोर या आउटडोर? आउटडोर. अच्छा, आउटडोर. इंडोर के बारे में बात करें. इंडोर के बारे में बात कर रहे हो. आई थिंक इंडोर में इट्स द बॉलर्स दैट टेक. बट एक सलमान अरशद ने आपने एक सेंचुरी मारी थी, आई डोंट नो आपको याद है कि नहीं. एक आपने सेंचुरी मारी थी और एक राजवंत ने मारी. अभी तक बहुत गिने चुने लोग हैं, प्रॉब्ली 3 या 4 लोग हैं जिन्होंने इंडोर में सेंचुरी मारी. सेंचुरी के अलावा मेरे जहन में, मैंने भी इतना खेला, मेरे जहन में वकास बट के कुछ स्पेल्स हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे. वकास बट तो आई थिंक जितने मैंने मैचेस देखे हैं, अगर किसी ने मैच टर्न अराउंड किया हो कंसिस्टेंटली तो वो वकास बट है 100%. लाइक ठीक है. उसने विद हिज बॉलिंग स्पेशली इंडोर्स, आई थिंक ही इज अनप्लेएबल. ठीक है. Manmeet, last question about indoor, and then I'm going to come to outdoor cricket league, and I'm going to talk about different logistics at the end. But indoor cricket league में ऐसा season जो मनमीत को not as a president, as a cricketer याद रहा हो कि यार ये season मेरे लिए सबसे ज़्यादा memorable है, which I will cherish for my life. As a cricketer, not as a president. आई थिंक लास्ट विंटर. अच्छा. बिकॉज हमने वी गॉट द चैंपियनशिप ऑफ द हाईएस्ट डिवीजन, और इंडोर के अंदर वो करना, डिफीटिंग VP Thunderbolts. VP Thunderbolts. We got them all out in like 17-18 runs. Wow. So, you know, like against a team जो, you know, like that's a Super 9 team. Yeah. But again, you know, cricket is like, और उन्होंने semi-finals में किसी टीम को 14 या 15 पे all out किया था. So packed team to Slesh playing, Siddharth playing. Everyone, It's a packed team. everyone. Yeah, it's So a अगर packed आप as a cricketer, as a captain मुझसे पूछोगे तो that'll be the most memorable season of indoors for me. Okay. Chale. Before I talk about summer cricket, what made Lakeshore, being so successful indoor, made Manmeet Singh and the body decide to go play outdoor cricket league? I think concept वही था जब मैं student था, when I was organizing for the students. You have the feeling, you know, why not take this forward and give this opportunity to the teams. Same thing happened with the winter. When we were organizing so good in the winter season, I think that feeling came that we can do it in the outdoors too. It was tough.
honestly it was really tough because they're at that time when you start there are already established leagues and you don't get hold of the grounds that easy. We had to work really hard over the years, but I think God has been kind. I don't want to get into ground management, political discussion here, but कितना अरसा हो गया है आउटडोर सीजन को लेक शोर के शुरू हुए और कितने डिवीजंस आपके? गिव मी सम डिटेल्स फॉर द व्यूअर्स प्लीज. It's been 8 years now. और इस लास्ट ईयर अगर मैं आपको सिर्फ लास्ट ईयर की बात करूं तो वी हैव T12, T15, T20, T25, T30 and test matches. यार ये मैं आई एम होल्डिंग बैक ऑन दैट सब्जेक्ट. आई एम गोना कम टू दैट. हां, टेस्ट मैचेस, जी. बट दैट्स अमेजिंग. यू हैव सो मेनी फॉर्मेट्स. जी. ग्राउंड मैनेजमेंट मुश्किल नहीं होती? व्हिच ग्राउंड्स लेक शोर आर प्लेइंग नाउ? आई थिंक मिस्सागा के अंदर सारे ग्राउंड्स जो आपको पता है वो सब है. Danville's the most famous one. करेक्ट. एंड वी हैव दैट. हमारे पास ब्रैम्पटन के ग्राउंड्स हैं, ओकविल के ग्राउंड्स हैं, टोरंटो के ग्राउंड्स हैं. लास्ट ईयर वी आल्सो प्लेड इन नायग्रा, द नायग्रा क्रिकेट सेंटर. सो आई मीन मल्टीपल ग्राउंड्स स्प्रेड थ्रू आउट द सिटीज. So people involved in the league through different clubs are getting to play at different facilities, at different quality of grounds as well. Manmeet, formats की बात की है. T12 is a unique format. T20 is very common format. T30 has been, I would say it's not very unique either. But the format I want to talk about is, and I'm going to be honest, MCL started red ball cricket, but that was 50 over. Right. And it didn't work out very well. Right. Lakeshore doing a test match cricket. And I was trying to understand the logistics behind it because it's very difficult. Ground management is very difficult. Correct. How does it work? The only reason we are organizing a test match is because we want to keep this format alive. What is a test match? Like So- in Lakeshore, what is a test match? In Lakeshore, test match is a bit flexible. So it's like, we play after the working hours. So it'll be like a 4-hour session instead of an 8-hour session. Okay. But that'll go for like 5 or 6 different days. Okay. So that's how it works. Two innings? Yeah, same. Oh, same, okay. Test match is same. So अच्छा. आप उसमें कुछ Cricket नहीं आप change नहीं कर रहे? नहीं. अच्छा. Cricket is exactly the same. अच्छा. It's just कि आपको work hours के बाद वो चीज़ करनी पड़ती है. That's the only difference. ये हो सकता है कि शायद किसी दिन पे ग्राउंड एक हो, दूसरा दिन पे ग्राउंड कोई और. तो अच्छा, मैच के दरमियान ग्राउंड भी चेंज हो सकता है? जी. Oh, तो wow, तो आपको पहले से पता होता है. अच्छा, Why तो- at the toss you know कि कौन कौन से डेज पे क्या ग्राउंड है. So the management and the captains can decide their strategy that I okay, agree. we'll be playing first 2 Yes. days on ground A, Correct. ground B. So it's part of the strategy. That's correct. Wow, that's correct. amazing. तो उसमें बहुत exciting होता है that as a captain you know the grounds and then how you want to approach the test match. Okay. How many teams are playing that test cricket? So test cricket is more for individuals to join. वो हम teams क्योंकि teams के लिए 5 दिन commit कोई team नहीं है Oh, ऐसी. so it's run by Lakeshore. People commit individually, and you That guys is put them correct. in the team. That is correct. What if a team has 11 batsmen? No, I mean they can have 11 batsmen. That's fine. होता है ऐसे. अच्छा. That's fine. But इतना Canada में patience नहीं है लोगों के अंदर because everyone is used to playing like shorter format. तो जो बॉल उनको लीव करनी होगी वो डबल माइंड में आ जाएंगे उसमें. ठीक है. अच्छा मनमीत, मैं टेक्निकल डिटेल में डिस्कशन के बगैर अगला क्वेश्चन मैं वही करूंगा जो मैंने इंडोर के हवाले से किए थे. ब्रीफ एंड क्विक क्वेश्चंस. Any memorable, any club you want to mention and give a shout out to which has been supporting Lakeshore League and this level of cricket? I think काफी clubs हैं. There are a lot of clubs that have been supportive of Lakeshore from the first year. Like to take names, there was one club called Royal Mavericks. Now they're called Toronto Mavericks. There was a club called Rogers. Now they're Top Guns. There's VP Thunderbolts. Like there are clubs who've been playing from the first year. That's a huge plus for us. There was a club called Knights Cricket Club. पहले साल से पहले दिन से उनका क्लब ही तब बना था when they joined Lakeshore. So many teams, like. ठीक है. No, I don't want to put you on spot. I'm just. The idea here is to address that a lot of people have been involved and engaged with Lakeshore from day one. Right now there are more than 5,000 players playing in the league. Overall, अगर मैं आपको देखूं तो winter and summer. This speaks for itself. I am just so thankful to everyone, regardless of who you are. If you have any part in the league, it's just because ये league अकेले नहीं चला सकते. ये सबके साथ चलती है और इसके अंदर भी जो आपके captains हैं, they have to be supportive. आपका जो environment आप set करना चाहते हो, उनको भी वही चीज़ लेके आगे आनी है, right? ठीक है. मनमीत, 2-3 क्वेश्चन है क्विकली मैं क्विकली पूछूंगा. लेट्स कीप देम ब्रीफ बिकॉज वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम एंड आई वांट टू आस्क लॉजिस्टिक क्वेश्चन एट द एंड. मेमोरेबल परफॉर्मेंस किसकी?
anyone, any player, or summer में किसी player की या किसी की भी किसी team की, anything you want to mention which is memorable to you as a president? समर में एक परफॉर्मेंस थी बाय एहसान खरल. अच्छा. We were chasing 250 plus in a semi-final and आज तक T20. in a T20 match और वो semi-final match था. I don't know how this guy did it. Monster sixes by him. And this season overall Mudassar Malik has been phenomenal. Like more than 3,000 runs in one season. Incredible. Danish Tanveer is another one. Not Danish Tanveer. I think Danish Bashir. Danish Bashir, Yeah, sorry. Danish Bashir. Oh, incredible. That guy played multiple formats, is averaging 9 centuries, over man. 100 runs at average. It's just crazy. It's just crazy. Yeah. Yeah, absolutely. Any performance Manmeet as a cricketer cherish in summer at Lakeshore? There was a T12 match. I was playing against Oneness, and you know we were done. We were down and out. I came to bat like with 5 overs remaining, and I don't know. You know, when it's your day, it's your day. I hit a quick 70 something in like 20 balls, and I took like almost a 5-wicket haul in a 12 overs match. And this season, I won the final for my team. Was there when we lost quick wickets. Like personal milestone. Yeah. Perfect. So yeah. Perfect. All right, Manmeet. I am sure, guys, you must have listened to this, and some of you might want to join Lakeshore. So I'm going to jump into logistics. Manmeet, a lot of leagues are having trouble and have wait list. I'm sure Lakeshore does too. What is the procedure to get your team into the Lakeshore? What is the procedure? What are the fees like? Anything you want to talk about? What do you have to tell the viewers or someone who wants to join Lakeshore, individually and with teams? Yeah, so you have two options. Individually, when you enter, you can, you know, you put आप किसी भी Eagles की team में खेलते हो, depending on your skill level and you know how you play. But you know, let's talk about the teams. There was a huge wait list last summer. So what teams did was they sent $500 deposit so that they can confirm their spot for the. That's why हमारे spots काफी जल्दी full हो जाते हैं for summer. You know, you played the summer. To be honest, we hosted 1,000 matches last year overall, summer and winter मिला के. So the wait list is pretty big. It's pretty big. So you can easily join by just sending the deposit, and that's you can fill the form on the website. All the fees is mentioned on the website, depending on the format you want to play for summer or winter. ठीक है. Manmeet, next question is a little putting you on a spot. And I don't know. A lot of leagues are non-profit and profit. Correct. So is Lakeshore non-profit? Yeah, it is not for profit, but there are so many, you know, like in the leagues. One thing is cricket, why you cannot go without, you know, your expenses and money. Money has is to be involved. expensive, man. Empire Right fees now, and everything. Yeah. just booking the facilities this summer, you know, like I don't want to name the facilities, but the You don't prices. have to- you don't have to tell me the prices. But the prices have gone up. Yeah, you of know, course, like, of so, course. What about a relationship with the higher bodies in Canada? When it comes to our league, we don't have any relationship with any of So the you're bodies. individual body, That is private correct. body. That Okay. is correct. Yes. Manmeet, that's amazing, and I can vouch that I've been playing indoor and outdoor Lakeshore, and as a cricketer, I have really, really enjoyed it. Management is amazing, umpiring is amazing, umpiring panel is amazing, and one thing I have seen consistent with Lakeshore that their schedule is. I have tried to request this guy to change a game. No chance. He is sticking to his rules and principles. That being said, Manmeet, thank you so much. I am going to play rapid fire with you. And but one last question I want to ask Manmeet as Lakeshore president. A league like Lakeshore does not run through one man. Yeah. So I think it's about time when we appreciate the league itself, we should appreciate the body, people who have worked behind it. So I would like you to tell us about few of the guys who have worked very hard to make this league successful. A lot of guys throughout the years. When we started, there was a guy called Shahryar Nisar. He is now in Pakistan. He was with me when we started this. When we were part of the student union, we started this, and then he shifted to Pakistan, and I miss him. But over the years, there have been a lot of guys. To mention, there's Sushant, who has shifted to US now. There's Kabir Tariq with us. We have Junaid Siddiqui. We have Saad bin Subu, who's been working tirelessly really hard. We have Siddharth. Still working. Still working really hard. We have Siddharth Sharma. We have Divjot Singh. We have Jasmeet Singh. So many names I can take on and on. But
the Mudassar Malik, all the guys as a team, they've been working solid. I'm sorry if I missed out any names, but we have a huge team that has been working tirelessly all these years. On a lighter note, अगर इसने किसी का नाम मिस कर दिया तो पकड़ लो बाद में मेरा. All right, Manmeet, time for rapid fire. All right, we're going to start from cricket. I am going to take a name, and the format is test. You have to pick one. I'm going to take two names, and I ask this question to everyone who's cricket related. We're talking about test cricket here. Sachin Tendulkar at his prime or Virat Kohli at his prime? Who would Manmeet pick? You can pick one. Sachin for sure. ODI, Virat Kohli. T20. Yuvraj Singh. Sachin or Virat? Sachin. T20 में? Not T20. फिर से क्वेश्चन है, पहले सिर्फ सचिन और विराट को कंपेयर कर रहे हैं. टेस्ट इज सचिन, ओडीआई ODI is Kohli. एंड टी20. T20 is Kohli. Okay, perfect. Now, Manmeet needs one top order batsman. Yeah, You have option available, batsmen at their prime. right. Ganguly or Rahul Dravid. Rahul Dravid. ठीक है. I'm gonna take two batsmen's name. Manmeet likes to watch, not to play, but to watch on TV. Joe Root, Williamson. Joe Root. Right. Babar Azam or Rizwan. Babar Azam for sure. Right. Talk about fast bowlers. Yeah. Waqar Yunus या वसीम अकरम. Waqar Younis. ठीक है. शोएब अख्तर या ब्रेटली. Cricketing wise, Brett You Lee. like to watch. I said you like to watch. Shoaib Akhtar. Shoaib Akhtar on TV you like Yes, to watch. I like to watch. That's not because of cricket, that's because of it. So because you answered. Okay, fine. All right, let's come to local cricketers now in Canada. We're talking about two left-arm spinners. Great, both of them are very big cricketers, so I'm not putting you on spot by taking their name. I've been asking a lot of people about Saad bin Zafar. When I take his name, everybody pick him, but I'm not going to take his name, so I'm going to ask you, Salman Nazar or Parveen Kumar? Salman Nazar. Salman Nazar. All right, batsman, Harsh Thakur. Yeah. Aaron Johnson. Harsh Thakur. ठीक है. Spinner, Junaid Siddiqui, Kavian Nasri. Junaid Siddiqui. Junaid Siddiqui. All right. Let's talk about all-rounders. And I am going to come a little down to club level and rather than international level. I am going to take the name of two brilliant all-rounder who have played for your club, Waqas Butt or Ehsan Kharal. Waqas Butt. All right. Fair enough. I won't put you on spot. Let's go to Bollywood. Salman Khan, Shah Rukh Khan, Amir Khan, या Irfan Khan. Salman Khan. माधुरी दीक्षित, काजोल. Madhuri Dixit. कैटरीना कैफ या करीना कपूर. Kareena Kapoor. ठीक है. One last question. Who, and now it's rapid fire, but I'm not gonna give you an options. Actually, few last questions. Who is Manmeet Singh's favorite US president? US President. Obama. Obama. Who is your favorite prime minister of Canada? It doesn't have to be current prime minister. Unless you want to be politically correct. No, I would say Carney for me. Oh, really? Yeah. Oh, really? That's interesting. Okay. Thank you so much for joining us today. Before I let you go, I want you to talk to our viewers directly. What message do you have for our viewers? One message I want to tell you is, you have, I don't know how long you're going to live. So make sure to please follow your passion. If you love cricket, love anything, do not think twice. If you love the sport and you've not played the sport, even for, quite some time, make sure to take that jump because the time is now. Yeah. Thank you so much, Manmeet, for joining me today. Viewers, Lakeshore Cricket League, look at their page, look them up online. You will see their content and you will see how much guys are enjoying. Manmeet, as president, have worked a lot to make sure that his presence have been there on social media for people to see. That also gives sponsors the opportunity. Contact Manmeet Singh. You can find them online. With that, his message, I love it. Do what you want to do in your life. Life is short. Enjoy it. This was the episode of Tea Time. I'm your host, Salman Rashid. See you next time.